कुछ नहीं बताओ बात बढ़िया चल रहा है अच्छी बात है। तो इतना टाइम नहीं है कि सबको बर्थडे देखोगे।
आगे आ जाइए। Vidyanam, Narasya Shubham Adita, Prachandi Guptam Dhanam, which means knowledge is the greatest adornment of a person, a hidden treasure that can never be stolen. Yes, education indeed is the light that transforms individuals and builds nations. It shapes character, nurtures wisdom, and empowers humanity to progress towards excellence and equity. Good morning and warm greetings to everyone present here. With immense pride and gratitude, we welcome you all to the valedictory session of the National Seminar on Education for Vikasit Bharat at 2047, inspiring teachers, empowering students, and enriching communities. Organized by the Army Institute of Education. I now request our Honorable Principal Ma'am to felicitate our guest of honor, Dr. R. S. Yadav, Professor Emeritus at Jain Vishwa Bharati Institute. And our guest speakers, Mr. Gajanan Mali, former Research Officer, Government of India. And Dr. Sanjay Chaudhary, a distinguished academician from Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad, and President of the Council for Teachers' Professional Development. We would also like to welcome Colonel Abhay Rajwanshi sir, former Registrar of AIE. Your presence today adds great value and inspiration to this valedictory session. I would now like to request our guest of honor, Dr. R. S. Yadav, to kindly felicitate our principal, Dr. Abhilasha Gautam, for her dedication and continuous guidance. It is my honor to welcome our respected Principal Ma'am, Dr. Abhilasha Gautam, a visionary leader whose guidance continues to strengthen the academic efforts of AI. Please welcome her with a huge round of applause. Very good morning to one and all present here.
Keep your aim high, for it is the desire to touch the star that propels humankind forward. With the spirit of aspiration and determination, I extend my warm greetings to all present here for valedictory session of this 2 days national seminar on education for Viksit Bharat at the date 2047. These 2 days have been a journey of ideas, inspiration, and introspection, where educators, thinkers, and learners have come together to envision the roadmap for a stronger, self-reliant, and enlightened India. First and foremost, I am grateful to the management of Army Institute of Education who led us support to organize this event. I am very grateful to Dr. Sanjay Chaudhary sir for giving us this opportunity to have a collaboration with Council for Teachers Professional Development. It is my proud privilege to welcome our chief guest today, Professor Dr. R.S. Yadav sir, former Vice Chancellor, Baba Mastanath University, an eminent educationist, a scholar of great repute, and a beacon of wisdom in the field of education, in the field of higher education. Sir, your lifelong contribution to the advancement of knowledge and character building continues to inspire the teaching community, to the teaching learning fraternity across the nation. We are deeply honored by your gracious presence. You are welcome, sir. A very warm welcome to our eminent guest, Mr. Dejani Mali, founder and head of 10 News Network, a visionary journalist who has redefined the role of media in public awareness and education. A really enthusiastic person I have met him many times. Every time I met you, sir, the energy that you have and the positivity, I'm always impressed with you. Sir, your constant engagement with youth and education issues truly reflects your commitment to national building through information and insight. It also gives me immense pleasure to welcome our own Dr. Sanjay Chaudhary sir, President Council for Teacher Professional Development, India, Principal Saraswati College of Education, an esteemed collaborator and value partner. Sir, your efforts to strengthen teacher educational development, teachers' professional development in India have been instrumental in aligning education with the vision of Viksit Bharat 2047. The events can never be complete without the blessings of our elder ones. I welcome Tamil Rajvanshi sir. Sir, thank you so much for being our strength, for being the backbone of this institute. Thank you so much. Friends, today as we stand at the threshold of new educational era, the world's eyes are fixed on India. Some look upon us with admiration, others with apprehension. For India today is not just a nation rising, it is a civilization reawakening. In these challenging yet defining times, when the weaving of our education system is undergoing a profound transformation, our collective resolve becomes our greatest strength. We are not merely adapting to change, we are leading it. Guided by the timeless principles of Indian knowledge systems and futuristic vision of NEP 2020. Education today must not only prepare students to compete, but to create, not only to excel, but to elevate. It must awaken the potential within each learner to become a contributor to the world's progress, not as an imitator, but as an innovator. And as we aim for Viksit Bharat for 2047, let us remember, जो आसमान का छूने का हौसला रखते हैं, जो आसमान को छूने का हौसला रखते हैं, वो तूफानों से नहीं डरते, जो भारत के भविष्य को गढ़ने निकले हैं, मुश्किलों से नहीं डरते. Our journey towards a developed India demands not just policies, but passion, not just reforms, but resilience. It demands teachers who inspire, students who aspire, and institutions that ignite transformation. Before I conclude, I take this moment to express my heartfelt gratitude once again to our chairman, Major General Raj Chino, ESN, whose vision and unwavering support have been the guiding light behind the successful endeavor, to our collaborating partners, CTPD India, for their academic partnership and encouragement in every step of planning and execution, to all our distinguished speakers, experts, and participants for their thoughtful deliberations and enriching contributions, and above all, to the entire AIE family, our dedicated faculty members, non-teaching staff, students, and technical support, and housekeeping teams
for their discipline, devotion, and teamwork that made this event seamless and successful. Each one of you has embodied the true spirit of service and excellence, the spirit that defines the Army Institute of Education. As we are heading towards closing the meaningful journey, let us carry forward the light of learning, the courage to innovate, and the will to serve. Let us pledge to continue building classrooms, to nurture society, to nurture curiosity, communities that embody compassion, and a nation that commands respect, not by power, but by knowledge, character, and unity. Together we shall strive, together we shall rise, together we shall build a Viksit Bharat. We can be less in numbers, but together we will roar high, and then Greater Noida and the whole India will come to know that yes, AI is still there, and Army Institute of Education will strive high, will shine high. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your insightful and motivating words. We extend a warm welcome to our guest speaker, Mr. Gajanan Mali, former research officer, Government of India, who has served with distinction in Parliament of India, the Planning Commission, and various central ministries. As the founder of PEN News Network, he has been a pioneer in the field of digital journalism, connecting lakhs of readers across India and promoting responsible media communication. His contributions in digital innovation and social service truly inspires us all. Please welcome Sir with a huge round of applause. We also request all the dignitaries please be seated in the stage. Please again welcome Sir with a huge round of applause. Good morning to each one of you. Respected Professor Aris Yadav sir, Dr. Abhilasha Gautam ji, Principal of Army Institute of Education, and Sanjay sir. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। अभी अभी हम लोग ज्योति जला के आए, थोड़ा सा हिंदी में बोलना चाहूंगा। ये हमारे भारतीय परंपरा में, संस्कृति में कहा जाता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, यानी कि आरोग्य ही धन संपदा है। लेकिन वास्तविकता ये है, मैंने थोड़ा सा सर विद योर परमिशन हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया। शुभम करोति कल्याणम ज्ञानम कौशलम कर्मम धन संपदा। मैं कहता हूं कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास कौशल नहीं है, और ज्ञान भी है, स्वास्थ्य भी है, अच्छा है, आपके पास ज्ञान भी है, कौशल भी है, और आप कर्म नहीं करेंगे, आपके पास उत्साह नहीं है, आपके पास प्रेरणा नहीं है, तो धन संपदा कहां से आएगी? और ये धन संपदा कि केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए नहीं है, समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी काम आती है। कि जब आप कमाते हैं तो आपको भारत सरकार जो है या राज्य सरकार जो है वो इनकम टैक्स देती है, जीएसटी लेती है, वो है। तो मैं ये कहता हूँ कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम ज्ञानम कौशलम कर्मम धन संपदा। अगर हम इसी को अगर वो करें तो ये है। I think that personally, the most important thing is, we all should, be developed in a all round. In a way, the first of all, we should maintain our good health, and then we should have the education, knowledge, and the skills. And these knowledge, education, and skills, it will help us to do our duties, to do our karma, to professionally develop. So the focus has to be on the education. So I thank Madam you have organized the seminar, the developed India and the role of the education. Because India, as Madam rightly mentioned, now is changing very fast. The whole world is looking towards India. Because now previously there was a bipolar world controlled by the USA and the USSR. Then came the regime of
of the USA, and now I think these things are dismantling. There are other countries like China, they are also coming forward. They have got a separate role. So European community, that EU, what we call now, they have less importance, and but India, whole world, all the developed nations are looking towards the India for the guidance and the way we are progressing under the dynamic leadership of the Prime Minister Narendra Modi. When he announced in the 15th August 2023 the concept of the Viksit Bharat, the whole India role, and I think the India can be a developed nation only if every teacher, every student becomes the ambassador of this is basically a circle. So there are many components. There is the Atmanirbhar Bharat, there is the Digital India, there is the Swachh Bharat, there is the Swasth Bharat. There are many components. Although when the Prime Minister Modi took charge, the planning commission was abandoned and Niti Aayog was formed earlier. Dear students, you may be aware, India, whatever the achievement has made, because there was a planned economy. Every year there was a 5-year plan for the central government, 5-year plan for the state government, and that 5-year plan was broken into annual plan. So there were physical targets, there were financial targets. So the all-out effort was made to, but now I think they have dismantled this concept of the planning, and now the planning is done only through the budget, annual budget. So different financial allocations are made for the different sectors by the central government, by the state government, and also to the third tier of the government that we call for Jilla Parishad, and for the urban areas there are Nagar Nigam, Nagar Panchayats, and Municipal corporations. So as a student of the education, you will become a teacher. Actually, when I look back to my educational journey, I remember one or two the best teachers, maybe from the schools, one or two best teachers again in the college and the university. So when you teach the students the knowledge, that is the first thing. But what matters is how you are teaching. Are you enthusiastic? Are you really well equipped? Are you motivated? If you are as a teacher, if you are motivated, then only you can impart the quality education. And now your role is more important, because our Prime Minister has set an ambitious goal of making India a developed nation. First of all, we have to understand what is a developed nation, because I am a student of economics, so I talk in terms of the GDP. Then there are the social parameters, the quality of the education, health, and social benefits. So everything comes. So that if we understand that, and if we because now you are a student of the education, maybe 2 years down the line, 3 years down the line, 4 years down the line, you will be a teacher and you will try to impart the education to the other students. But you have now the very the most important role. So apart from self-development, career development, you have to focus on how you can effectively contribute and motivate the other students. Because now the education 10 years back, now our Vice Chancellor sir, he will elaborate on it, and education of today and education down the line 10 years, it would have the great changes. Because now the mobile has come and the AI has come and the robot will come, so that many things will come. So knowledge is not a problem, because knowledge is available at the click of the button of your mobile. But the thing is that you have to remain the enthusiastic. You have to think for yourself, for your family, for your country, and you should try to give back to your alumni also, because this Army Institute of Education, the Army Welfare Education Society is a very big organization, and you are, I think, honored that this institute has a good infrastructure and good educational leadership. As a principal of this school, Dr. Abhilasha Gautamji, and I am sure that you will contribute for the development of the nation in the days to come. Thank you so much, madam, for inviting me. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable thoughts and thought-provoking reflections. We are privileged to welcome Dr. Sanjay Chaudhary, a distinguished academician
from Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad. With over 24 years of experience in teaching, research, and academic administration, Sir has authored several books, hold patents in education, and serves as chief editor of 2 national journals. He is also involved in professional development organizations, serving as program director of the Social Development and Research Foundation and president of the Council for Teachers' Professional Development. His dynamic leadership in teacher development and educational innovation reflects his dedication to quality education and lifelong learning. Please welcome him with a great round of applause. थैंक यू सो मच। काफी कम टाइम में जल्दी कनेक्ट हुई ये चीजें, वरना कई बार मुझे काफी समय लग जाता है। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आर.एस. यादव जी, मिस्टर गजानन माली सर, डॉक्टर अभिलाषा गौतम मैम और फॉर्मर रजिस्ट्रार सर, यदि एक बार पहले भी मुलाकात है। फैकल्टी मेंबर्स, बच्चों, मैं जितना विकसित भारत या इसके लिए एजुकेशन कैसे होनी चाहिए उससे रिलेटेड कुछ मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं थोड़ा शेयर करूंगा आपके साथ। और आप ये मान के चलिए कि इस तरह के जो सेमिनार्स हैं उनका पर्पस एक आइडिया जनरेट करना है आपके ब्रेन में कि आप आगे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कैसे वर्क करें, टीचर्स हैं तो उन्हें कैसे वर्क करना चाहिए। क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो इंडिविजुअल लेवल पे भी कंट्रीब्यूशन है, जिसके बाद इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी है, और गवर्नमेंट तो कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट करेगी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बातें मैं करूंगा अभी जब हम डिस्कस करेंगे इसको। और आप पाएंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि आप हैरान हो सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है। 2-3 चीजें हैं हमारे उसमें। जी एक तो विकसित भारत है, इंस्पायरिंग टीचर्स, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स और एनरिचिंग कम्युनिटीज। ये कुछ की टर्म्स हैं जो हमारे सेमिनार में हैं और इनको समझने वाली बात है। सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग। अगर मैं जिस इंस्टीट्यूशन में हूँ, डॉक्टर अभिलाषा जी जिसके प्रिंसिपल हैं, मैं ए ग्रेड इंस्टीट्यूशन है, तो डेफिनेटली ये बताता है कि ये इंस्टीट्यूशन एजुकेशन में अच्छा कर रहा है। और अगर इंस्टीट्यूशन अच्छा कर रहा है तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये उस दिशा में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जो हमारा टारगेट है विकसित भारत का, उसमें ये कह सकते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात आती है, जो पैरामीटर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। अलग से कुछ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाले, इंस्टीट्यूशन का अपना है, प्रिंसिपल का अपना है, और कुछ बातें करेंगे तो थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा जब हम विकसित भारत की बात करें कि भाई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गैप क्या है। जो डेवलप्ड कंट्रीज जिन्हें हम कह रहे हैं उनमें और हमें डिफरेंस क्या है, और बेसिकली उस गैप को खत्म करना है, कवर करना है, या जहां पर हम वहां से वहां तक जाना है कि जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज खड़े हुए।
अगर हम वहां पर पहुंच गए तो इसका मतलब हमारा देश विकसित भारत हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, और एजुकेशन में पहली चीज हम लिटरेसी की बात करते हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करोगे तो 100% या उसके आसपास उनका लिटरेसी रेट रहता है। और हम एडल्ट लिटरेसी का एक मैंने क्या कहते हैं स्लाइड दिखाई है आपको, उसमें इंडिया 2023 में 77.7% के आसपास था, और अगर मैं विकसित होना है तो कहां पहुंचना है 100%। तो ये क्लियर कट पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पहुंचना कहां है और गैप क्या है। अब इसमें इंस्पायरिंग टीचर्स की बात करें या एनरिचिंग कम्युनिटीज की बात करें, तो जो लिटरेसी रेट है, खासकर एडल्ट लिटरेसी की बात की मैंने, उसमें इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। वो कैसे कि उनके जो अपने इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि इंटरनल प्रोजेक्ट्स है, इंटरनल मार्क्स देते हैं, जो आमतौर पे ये देखा जाता है कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं आमतौर पर आपने देखे होंगे अपने इंस्टीट्यूशंस में भी, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, टीचर एजुकेशन हो, ये 5 फाइलें बनानी है, बच्चे कहीं से भी बना के लाते हैं, वो चेक हो गई, मार्क्स चले गए और हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन जब पॉलिसीज बनी थी तो इंटरनल असेसमेंट का ये कतई पर्पस नहीं था। दूसरा, इंस्टीट्यूशन को कम्युनिटी से कैसे कनेक्ट करना है। मान लीजिए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर ये छोटा सा ऐसा स्कूल ओपन कर ले या ऐसी कुछ व्यवस्था कर ले कि जिसमें आसपास के ऐसे बच्चे, क्योंकि जब लिटरेसी की बात आ रही है तो जो लेबर काम कर रही है वैसे लोग हैं, तो बच्चों को एक प्रोजेक्ट के तौर पे दे दीजिए उसे, और बच्चों को जो फाइल बने या उस पढ़ाने के ऊपर जो उनका असेसमेंट हो वहां से असेसमेंट करना शुरू कीजिए। तो ये रियल कंट्रीब्यूशन है। अगर ऐसा करेंगे तो लिटरेसी भी कम होगी और कहीं ना कहीं विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर हम अपने पुराने पैटर्न पर ही चलते रहेंगे कि बच्चों का मकसद सिर्फ पास होना है और हमारा मकसद जो यूनिवर्सिटी में कहा वही कुछ फायदे बन गई है और फिर वो रद्दी में चली जाती है, उससे विकसित भारत की तरफ हम बिल्कुल। और एक चीज और जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा कि सिर्फ लिटरेट कर देना 100% वो भी हमें विकसित होने की दिशा में नहीं ले जाएगा। क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ से अगर कोई बीएड करके जाता है और किसी विकसित देश में चला जाए तो उसे टीचिंग के लिए अलाउड नहीं होता। तो वो गैप क्या है, क्यों नहीं वो अलाउड कर रहे हैं? हमारे पास तो लाइसेंस है पढ़ाने का, टीचिंग का, क्योंकि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को वो उस तरह से मानती नहीं है। अब आप कहोगे तो हमारे साथ पक्षपात है या बायस है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और स्लाइड अगर आप मेरी देखोगे तो उसमें पाओगे कि लर्निंग आउटकम्स की जब बात आती है तो एक टेस्ट होता है जिसे कि पीसा हम वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। उसका पर्पस ये होता है कि लिटरेट तो आप हो गए, क्या आपकी जो लिटरेसी है वो फंक्शनल लिटरेसी है? अब आप कहोगे कि ये फंक्शनल लिटरेसी क्या चीज होती है? 15 साल के बच्चों का एक ऐसा टेस्ट होता है मैथ्स का, साइंस का और रीडिंग का, आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो अपनी डेली लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये वो टेस्ट है। इस स्लाइड पे देख रहे हैं सिंगापुर नंबर 1 में आता, जापान नंबर 5, कुछ कंट्रीज का मैंने दिया हुआ है। इंडिया ने 2009 में ये टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और टोटल 73 कंट्रीज थे, उसमें से इंडिया का जो नंबर था, जो स्कोर आया वो 72 था। उसके बाद इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सपोज कीजिए एमकॉम किया मैंने, तो मैंने एमकॉम तो कर लिया, लेकिन अगर किसी इंटरव्यू गया और मैंने पूछा कि जरा ये एक जनरल एंट्री है, जरा आप इसको करके बताएंगे सर, वो तो मुझे नहीं आता। ये जो गैप है ये अभी आ ही रहा है। आप लोग अगर टीचर्स यहाँ पर जितने बैठे वो महसूस भी करते हो इस गैप को कि हो क्या रहा है कि जो बच्चे कॉलेज नहीं आते वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा कि टॉपर वो था जो एक भी दिन कॉलेज नहीं आया, ऐसे भी एग्जाम्पल देखे। तो कहीं ना कहीं गैप हमारे असेसमेंट में, जो जिसका मजाक चल रहा है, हम सारी मेहनत कर रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बाकी चीजों करें, असेसमेंट को लेती है। और हमें इस हालत में खड़ा कर दिया है कि आज टीचर्स बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन हो, बच्चे क्लास में है, वो आगे रहे। एक बड़ा अच्छा मॉडल हमारे हिंदुस्तान में ही है सीए के एग्जाम का, जो आपने सभी ने सुना होगा। वो सब एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, असेसमेंट बहुत अच्छा है उनका, एडमिशन सभी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम, पास नहीं हो सकते आप, पास तभी होंगे जब उस लेवल के होंगे। अब यहाँ पे बच्चा जब उसमें एडमिशन लेता है तो वो भागता है कि मुझे अच्छे टीचर्स मिल जाए कहीं से भी और इस लायक बना दे कि उस एग्जाम को पास करें। हमारे आसपास ही है वो मॉडल की जो चल रहा है। तो गवर्नमेंट जो जबरदस्ती का थोपा हुआ है कि बच्चों को रेगुलर आना है, जब उन्हें वो मिल ही नहीं रहा रेगुलर आने पर, अगर वो टॉप कॉलेज से बाहर बैठ के कर सकता तो उस रेगुलर एजुकेशन का क्या फायदा। तो ऐसी चीजों से विकसित होने की दिशा में नहीं बढ़ा जा सकता, इनमें बदलाव लाने की जरूरत है। इसी तरह से जो असर की जो रिपोर्ट थी 2023 की, उसमें जो उन्होंने कहा कि 25% बच्चे क्लास थर्ड के ऐसे जो सेकंड की बुक नहीं पढ़ सकते, या 42% एथ क्लास के ऐसे बच्चे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में डिविजन्स या बाकी चीजें नहीं कर सकते। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि लिटरेट आप 100% हो भी गए, और जो लर्निंग आउटकम्स की बात आई, जिसमें टेस्ट की बात कर रहा था किसा की, उसमें जब हम फेल हो गए तो हम, क्योंकि हम फेल होते हैं ना इस एग्जाम में, तो पार्टिसिपेट नहीं करें। जितने मुद्दों की बात करें, ये बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस है क्वालिटी का एजुकेशन का हमारे कंट्री में, जिसकी तरफ बहुत कम ध्यान जा रहा है, चाहे वो लीडरशिप हो चाहे टीचर्स हो। और मजे की बात ये कि इस सिस्टम से पास करके वो बच्चे जब टीचर बन जाएंगे तो उन्होंने तो इस सिस्टम को देखा, तो उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं कि होना क्या चाहिए, तो सपोर्ट नहीं करेंगे। और एक्चुअल चीज में कहीं हो जाती है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिन्हें भी पता होता है कि होना क्या चाहिए। तो हम जो बार बार चिल्लाते हैं कि लिटरेसी 100% हो जाए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इससे तो लिटरेसी से कुछ नहीं होने वाला है, उसके साथ साथ फंक्शनल लिटरेसी भी 100%, यानी कि आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके कुछ क्रिएट कर पाते तो ठीक, और नहीं कर पाते तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप 2047 की जगह 21047 कर लीजिए, आप नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टेम स्किल्स क्यों रिक्वायर्ड है, और जो मैं फंक्शनल लिटरेसी की बात कर रहा था वो क्यों जरूरी है। नेस्कॉम की रिपोर्ट 2025 की कहती है कि 90% ऑफ फ्यूचर जॉब्स विल रिक्वायर स्टेम स्किल्स। आपको जॉब ही नहीं मिलेगी अगर आपके अंदर स्टेम स्किल्स नहीं होगी। और साइड में दे रखी है मैंने स्टेम स्किल्स की कुछ लिस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, टॉप 10 ये है, और भी है, लेकिन फोकस कर दीजिए क्या क्या चीजें। मतलब जब हमें कभी कोई स्किल का कोर्स करना हो, या हमें ये लग रहा हो कि हम जो भी कोर्स कर रहे हैं गलती से या इंटेंशनली, वो ठीक है, लेकिन करंट में 2025 में हमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड। और टीचर्स भी ये ना सोचें कि ये सिर्फ बच्चों को करना है, ये टीचर्स को भी करना है, क्योंकि चेंजेस बहुत आने वाले हैं। इसका एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, चीजें बदलने कैसे वाले और आने वाले टाइम में कितना ज्यादा चेंज है। मेरी छोटी बेटी 7th क्लास में है, और एक दिन रात को 8 बजे के आसपास आके कहती है कि मेरा कंप्यूटर का एक कोडिंग का एग्जाम है कल, मैंने कोडिंग की है लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है रन नहीं कर रहा, पाइथन का कुछ था उसका, और मैंने कंप्यूटर की एबीसीडी भी नहीं पढ़ी। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा बेटा अपनी टीचर को कॉल कर लो, मम्मी से बात करके, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में डीडी सुंदरपुरम में हुआ है, या किसी तरह हेल्प ले लो कंप्यूटर टीचर की। 1 घंटे कोशिश करने के बाद उसे कोई हेल्प नहीं मिल पाई, टाइम बड़ा और था 8 से 9 के बीच का। फिर वो अपनी मदर के साथ आ गई, ये ना हेल्प नहीं कर रहे, वरना ये कर सकते हैं। अब मेरी व्यवस्था देखिए, कंप्यूटर का एबीसीडी मुझे नहीं आता प्रोग्रामिंग का। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम वो कोड लेकर आओ। वो लेकर आए, मैंने वर्ड फाइल से कॉपी किया चैट जीपीटी में, से इतना लिखा कि भाई इस कोड को करेक्ट कर दो। चैट जीपीटी ने आउटपुट दे दिया, सब कुछ फ्री अवेलेबल, आउटपुट दिया, मैंने वापस पेस्ट कर दिया उसके फाइल में। उसने देखते ही बोला ये ठीक है, रन कर जाएगा। मैंने सिर्फ देख के कैसे पता लगा, रन करके देखो ना मेरे सामने। चलो नहीं 2 जगह पे कॉमा नहीं लगा था, लग गया इसमें। फिर मैंने जिद करके कराया, क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं थी उसकी, वो रन कर लिया।
जब रन कर गया तो मेरा स्टेटमेंट क्या था उसके लिए बता रहा हूँ। मैंने कहा आज से मैं तेरा कंप्यूटर टीचर, तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुझे कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। चलो ये तो मेरा कहना था, उसका क्या स्टेटमेंट था वो सुनिए। बात यही नहीं हुई। कहती है अब आपकी जरूरत क्या है, चैट जीपीटी है ना, कर दिया टीचर रिप्लेस। इस लेवल की चीजें अगर हम नहीं देख पा रहे और हमें नहीं दिख रही है तो आने वाले टाइम में ये होगा। और ये जो जेन जी या अल्फा जनरेशन की बात कर रहे हैं, जब ये लोग जॉब में या पढ़ाने में सब में आएंगे तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। तो जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो सभी के लिए, 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, 30 साल का, अपनी क्षमता से जितना कर सकते कोशिश कीजिए और करते रहिए। और जब ये करते रहेंगे डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी का जीडीपी में इम्पैक्ट होता है। तो जो विकसित भारत की बात करते हैं फिर हम वहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वालिटी क्राइसिस की हमने बात करी। एक मैं अक्सर बात करता हूँ भाषा को लेकर। मैं हमेशा कहता हूँ खासकर प्राइमरी लेवल में जब हमारे ब्रेन का हम कहते हैं कि बच्चा 10, 12, 14 साल का होता तो क्योंकि यहाँ बीएड के बच्चे बैठे हुए साइकोलॉजी भी कहती है मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेन का डेवलपमेंटल सिचुएशन में होता है। वो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिस भाषा बोला जाता है, वो सारी चीजें हैं। रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, नेटिव लैंग्वेजेस की। और रिसर्च भी है क्या बहुत सारी आई है पिछले दिनों में, तो वो कहती है कि बच्चों को स्पेसिफिकली प्राइमरी एजुकेशन में उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप जो है एजुकेशन दीजिए, उन पर किसी एक्सटर्नल लैंग्वेज को थोपिए मत। फिर एक सामने से लॉजिक आता नहीं, हम बच्चों को ग्लोबल एजुकेशन देंगे। तो आप भी जानते हैं किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज को, इंग्लिश को लो, चाइनीज लो, बाकी किसी भी लैंग्वेज को लो, 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं लगते। उनके कंट्रीज में भी पढ़ने जाओगे तो कहते हैं पहले साल हमारी लैंग्वेज पढ़ लो, उसके बाद फिर जो भी कोर्स करना है। यही लैंग्वेज 1 साल से ज्यादा का होता है नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ ग्रोथ कर रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा हायर स्टडीज में शामिल कर लीजिए। अगर आप नहीं करते ऐसा, जिद करते, या मेजॉरिटी में 70-75 साल से सिस्टम चल रहा है, तो सिर्फ रोड लर्निंग हो रही है, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं हो रही है। आप मेरे कहने से और कुछ नहीं, गूगल करके 5-6 ऐसे कंट्रीज उठा लीजिए, क्वार्टर कंट्रीज है, और ये देखिए कि अपने कंट्री के बच्चों को जो उनके अपने सिटीजन है वो किस लैंग्वेज में एजुकेशन, बाहर से जो आ रहे हैं वो तो एक दूसरी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। उन्हें पहले वो अपनी या तो लैंग्वेज सिखाते हैं, उन्हें तो इंग्लिश का ऑफर करते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे उनकी अपनी भाषा में सीखते हैं, ज्यादा बेटर ओरिजिनल थिंकर होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि नोबेल प्राइज और ये सब जो है कभी काउंट करके देखना उनके हिस्से में ज्यादा आ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कई बार स्टडीज भी आई है तो इसलिए आई है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि उसमें उनकी ओरिजिनल थिंकिंग उन लोगों से बेटर है जिन्होंने जबरदस्ती दूसरी भाषाओं को अपने बच्चों को पढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, मैं तो नेटिव लैंग्वेज की भी बात नहीं करता, इसमें एक और बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है। एक स्लाइड मेरी बीच में गायब हो गई, उसमें था कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है जब इंडिया में आई तो उन्होंने अपने जो एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में देने शुरू करे, उनकी सेल्स नहीं इंक्रीज हुई और फेल हो गए, तो वो इंग्लिश में लेकर आए, या इंग्लिश में ना वो दूसरी भाषाएं, जैसे मान लीजिए कन्नड़ है तो इंग्लिश और कन्नड़ को मिला के क्या पाओगे, जो कुछ कहते हैं उस तरह से मिक्स किया हर जगह रीजनल लैंग्वेजेस में, उनकी सेल्स इंक्रीज होनी शुरू हुई, लोगों को उनकी बात समझ में आनी शुरू हुई। इवन मैं तो रीजनल लैंग्वेजेस की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पर वहां की नेटिव लैंग्वेज का बोलना, इस तरह का मिक्सअप करें तो और ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आता है। क्योंकि इतने सालों से क्योंकि इंग्लिश को इस तरह से इंटीग्रेट किया गया कि उसके वर्ड्स हमारे जहन में है, तो ऐसा भी नहीं कि उन्हें हटा के नेटिव लैंग्वेज, ये कुछ ऐसे चेंजेस है। जब ये चीजें आएंगी बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो मैंने पहले बताया था आपको कि पीसा वाला जो एग्जाम है जिसमें हमारा 72 नंबर था, फिर हमने शामिल ही नहीं हुए, ऐसे एग्जाम्स में फिर हम शामिल होने लगेंगे, हमारी भी रैंकिंग होगी, वो भी जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं होगा तब भी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात आती है। इन्वेस्टमेंट पिछली बार 4.9% था, जस्ट लास्ट टाइम 4.6 और कम कर दिया, जबकि 6.5% की बात तो बहुत पहले हो चुकी 30-40 साल पहले। इंडिया को कम से कम 6 से 8% के बीच में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करने से सैलरीज बढ़ जाएगी। आगे कुछ और चीजें नजर आएंगी आपको, जैसे कि बहुत से स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन का वो कम है। मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात
इसलिए नहीं, तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन बढ़ेगी विकसित भारत की। उसके बाद है टीचर क्वालिटी। टीचर क्वालिटी में तो अगर किसी ने एनईपी का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो टीचर एजुकेशन के बारे में तो बहुत बुरा लिखा उन्होंने, मतलब ये बड़ी बात है क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, पूरी दुनिया ने पढ़ा होगा कि टीचर एजुकेशन में तो डिग्री सेल की जा रही है। ये स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि कहीं से ऐसी मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर मैसेज करते हैं बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसा लिखने के लिए। आमतौर पर ऐसी चीजें हाइड कर दी जाती है, ठीक है हमारी कंट्री में लोगों को क्यों बताएं। बाहर की कंट्रीज में मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, सर्टिफिकेशन कंपलसरी है और टीचर्स का रेशो 112 to 150 इंडिया में 35% दीक्षा के अनुसार देखो तो अनट्रेंड टीचर्स और 1 to 30 का रेशो कितना है, डबल रेशो है अप्रॉक्स। यानी कि इससे पता चलता है अगर हम रेशो पे ही पहुंचे तो हमें और डबल टीचर चाहिए। और हमारे यहाँ टीचिंग में आ कौन रहा है, अगर मैं कहूँ पूछूं लोगों से, जब कुछ नहीं हो पाता ग्रेजुएशन करके हर जगह से फेल हो चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। मैं टीचिंग में आया तो मेरी चॉइस थी, जिन लोगों की चॉइस थी वो ऐसी ऐसी चीजों को छोड़ के ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कॉर्पोरेट में थे लेकिन उनको टीचिंग में आना था, वो हाफ सैलरी पर आ गए कि नहीं मुझे पढ़ाना ही है, जो मजा पढ़ाने में आता है मुझे कॉर्पोरेट में नहीं आता, ऐसे लोग। पर मेजॉरिटी में क्या होता है कि कहीं भी कुछ नहीं हो पाया तो चलो कम से कम ये कर लेते हैं, पढ़े हुए हैं तो पढ़ा तो लेंगे। बड़े कैजुअल अप्रोच के साथ टीचिंग चल रही है, जबकि टीचर की क्वालिटी थोड़ा अलग तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों चीजों की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है और अच्छे लोग टीचर कैसे बने आए ऑप्ट करें वो बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बहुत मिसिंग है। और ये बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है कि अगर किसी कंट्री के टीचर्स क्वालिटी के नहीं होंगे, आप कोई भी ईयर रख लीजिए आप विकसित भारत की नहीं पहुंच सकते, एट एनी कॉस्ट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। डेवलप्ड कंट्रीज में 100% आपका इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, कंप्यूटर साइंस लैब सारी चीजें होती है। अब हम अपने कंट्री की बात करें, फंक्शनल जो कंप्यूटर है, फंक्शनल का मतलब जो कंप्यूटर काम करता है, अगर आप उसे छुओ चलाओ बटन दबाओ तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करेगा। 62% स्कूल्स में और क्लियर करने की 38% स्कूल्स में कंप्यूटर ही, यानी कि 38% स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को तो डिजिटल एजुकेशन एआई इन सबसे बाहर ही करती है। उसके बाद जब इस डेटा को और नीचे आके देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस तो 36%। अब कंप्यूटर विदाउट इंटरनेट तो बेकार है, आप भी जानते हैं। तो अगर हम 36% पे आ रहे हैं तो जरा देखिएगा कि कितने परसेंट बचा। 64% तो ये मान लीजिए कि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन एआई एजुकेशन की बात है। ये 36% तो वो फिगर आ रही है जो आज है। मैंने एक गवर्नमेंट के डेटा से उठाया था तो उसमें ये निकल कर आया था कि ऑलमोस्ट 9.5% तो शहरों में कंप्यूटर्स थे विद इंटरनेट, घरों में रूरल एरिया का 0.6%, अप्रॉक्स 10%। और हमें दिल्ली में गुरुग्राम में या आपके ग्रेटर नोएडा में रहकर कैसे लगता है, ऐसे लगता है सब कुछ डिजिटल है, दुनिया ही ऐसे चल रही है, हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकलते। पता चलता 90% के पास तो कुछ है ही नहीं। और ये आप लोग भी जानते हैं कि एक कंट्री जो डेवलप्ड है 100% लोगों के पास या अप्रॉक्स उसके आसपास लोगों के पास चीजें हैं, तो यहाँ पे हमें कितना नंबर सबसे तय करना है। और जब हम पहले बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, ये सब चीजें मिसिंग है। ये पैसा जो जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर काम आएगा, जो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। उसके बाद 24% तो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी गई, यानी कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट लेके तो कहां से जाते हो, कुछ कर ही नहीं सकते। ये कुछ गैप्स है, चैलेंजेस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमें जो इंटरनल अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना कि आउटरीच प्रोग्राम्स करो, कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करो, ऐसी चीजें सामने हो, डेटा सामने हो, या आप लोग पढ़ें या टीचर्स आपके बताएं, आपको कुछ रिपोर्ट्स आप देखा करो गवर्नमेंट की, आप उन पर बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा चेंज लाया जा सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
कोविड आया, बॉम्बे में प्रोफेसर थी, बहुत लोग ऐसे नहीं होते, बहुत रेयर होते, अचानक से क्लासेस बंद हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, उनका मन बड़ा विचलित हुआ कि अच्छा खासा मैं क्लास में पढ़ा रही थी, मेरे स्टूडेंट्स की एजुकेशन कैसे होगी, कनेक्ट होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं, प्रोफेसर थी, नेटवर्किंग थी, लोगों को जानती थी, लोगों से रिक्वेस्ट की कि आपके पास जो पुराने फोन हो वो प्लीज डोनेट कीजिए, उसको नाम दिया उन्होंने डिजिटल दान, एक बाद में वो भी चलाया उन्होंने, क्या कहते हैं, मिशन, और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाना अपने स्टूडेंट तक, तकरीबन 200 स्टूडेंट्स को उन्होंने मोबाइल फोन पहुंचा दिए कोविड में उनके घरों में, और उन्होंने क्लासेस चलाई। किस क्लास में 200 लोग बैठते बताइए, इंटेक 50 का, 60 का, 100 का भी नहीं होता, उन्होंने 200 बच्चों को पढ़ाया। और ये मैं पावर बता रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं ना आपके टॉपिक में कि कहीं इंस्पायरिंग टीचर्स, ये होता है इंस्पायरिंग टीचर। अगर आप सिर्फ उतना कर रहे हो ना जितना यूनिवर्सिटी में सिलेबस में दिया और जितना प्रिंसिपल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ नौकरी कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूशन वो कि उसके अलावा क्या कर रहे हो, सोसाइटी को क्या दे रहे हो, क्योंकि सबसे मिला है आपको, ये भूल जा रहे। तो जब ये सारी चीजें हैं तो मैंने इसलिए बताया कि अगर जैसे यहाँ पे कभी कंप्यूटर्स नहीं, डिवाइस नहीं थे, तो उस लेडी ने 200 डिवाइस अरेंज कर दिया और एजुकेशन सिस्टम को चालू रखा, ये इंस्पायरिंग टीचर होता है। ये स्लाइड में अक्सर दिखाता हूँ, एक बार मैंने बनाई थी लेकिन हमेशा काम आती है। कोविड में 3 तरह के फेसेस नजर आए, नो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो अगली फेस नजर आएगा होगा, तो वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये वही था, अगर मैंने 2020 का जब डेटा लिया था तो 90% लोग इस स्थिति में थे जो तीसरा अगली फेस नजर आ रहा है। बैड फेस, बैड फेस के अंदर इनके पास सारी चीजें हैं लेकिन इनके पास ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, कैसे टूल्स को यूज करें वो करें, ये 9% के आसपास है। गुड फेस हमारा सिर्फ 1%, यानी कि पहले तो 1% 10% को ट्रेन करें, तो ये 10% मिलकर बाकी 90% को धीमे धीमे दूर करें, तब बात मानिए कि विकसित भारत की तरफ हो जा रहे हैं। अदरवाइज जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कैसे उसको क्रिएट करूंगा, वो है ना आपका ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, किसमें जब आखिरी वो कहते हो कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्रिएट करना, तो नॉलेज लेने के बाद अगर कुछ क्रिएट नहीं कर पाए, सिर्फ सामने वाले को नॉलेज लेने के बाद देते रहे, तो फिर कोई फिर वो सिर्फ नॉर्मल लिटरेसी जैसी चीजें, उससे ज्यादा कुछ फंक्शनल कुछ है चीजें, तो फिर है कि आप एजुकेट हुए, आपने एजुकेशन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये कुछ 4-5 गैप निकल कर आए जो मैंने बताए, लिटरेसी का, लर्निंग क्वालिटी का, इन्वेस्टमेंट का, टीचर ट्रेनिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। कुछ मैंने सिनेरियो एग्जांपल भी दिए कि लोगों ने अपने दम पे कैसे किया, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करा, हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करा, बहुत सारी चीजों को भी कर सकते। इसके बाद है, ये है संदीप कुंड, ये एक प्राइमरी टीचर है महाराष्ट्र में, और किसी गांव में इनकी जॉब लगी। जैसे प्राइमरी टीचर्स आपने देखे होंगे, बच्चों की हालत वैसी जैसे गिने चुने बच्चे होते हैं। इन्होंने कोई पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे बस का नहीं है पढ़ाना यहाँ पे, और मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ या जो भी कुछ है, बड़ा मुश्किल। फिर जो भी कुछ है, जहां से भी इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने उस स्कूल को डिजिटली चेंज करना शुरू किया, और ऐसा चेंज किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इनको शेयर किया था। कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी ट्विटर हैंडल पर ऐसे ही कोई चीज शेयर नहीं करता। जब उनका काम को रिकॉग्नाइज किया गया, गवर्नमेंट ने उस स्कूल को जाके विजिट किया, उनकी मेथोडोलॉजी को देखा, पता नहीं कितने करोड़ का बजट पास किया, और जितने भी टोटल 5000 स्कूल थे पूरे स्टेट में महाराष्ट्र, उस मॉडल की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसको सभी स्कूलों में उस तरह से बदलाव करने का। ये होती है पावर इंस्पायरिंग टीचर्स। प्राइमरी टीचर होता क्या है अगर आप कहोगे तो, और वो प्राइमरी टीचर ने वो करके दिखा दिया कि गवर्नमेंट कह रही है हम बजट पास करते हैं, आप करके दिखाओ पूरे के पूरे। इंडिविजुअल की पावर बता रहा हूं मैं आपको। हमारे दिमाग में जो रहता है कि मैं क्या कर लूंगा, मेरा इंस्टीट्यूशन क्या कर लेगा, आइडिया जनरेट करना, एक मॉडल प्रिपेयर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, शुरू में कोशिश करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि
स्टार्टिंग कोर्सेज से होती है, छोड़ो मत, रिजल्ट्स भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। और जहां आप सक्सेसफुल होने लगते हो ना, आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आपको लगेगा तब कौन होगा, तब इतने होंगे, आपको चूज करना पड़ेगा किससे मदद लेनी है, किससे। ये पावर है इस पैरेंट टीचर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग स्कूल है और ये है आपके बुधेला विलेज, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। अच्छी बात यह कि वीरांगना प्रसाद शर्मा एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर थे, इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया। ये इतनी सारी चीजें ऐसे बता रहा हूँ आपको कि छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटी छोटी केस स्टडीज ऐसे आपको नहीं पता, लेकिन बाहर छोड़िए, इंडिया में IITs को तो सब जानते, IIMs को तो सब जानते, वहां पे ऐसे केस स्टडी इनको पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा क्या करती है इन्होंने, टीचिंग वाला काम करा, किसी बीएड कॉलेज में मुझे बता दो, किसी भी बीएड कॉलेज में इनकी केस स्टडी के बारे में कोई बात हो, क्योंकि सब सिलेबस में नहीं है। अरे एक वैल्यू एडेड कोर्स बना लो 30 घंटे का, 30 लोग ऐसे चुनो, हर साल गवर्नमेंट टीचर्स को जो अवार्ड देती है, जो राष्ट्रपति अवार्ड में, उनमें से किन्हीं 30 टीचर्स को उठा लो, ऐसी केस स्टडी नजर आ रही है बहुत ही। लेकिन हमें क्या ना, हम बच्चों में गांधी टैगोर को पढ़ा रहे होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा होता है मैं गांधी और टैगोर को कभी पढ़ नहीं पाऊंगा। हमें ऐसा पढ़ाओ ना, मुझे जैसे टीचर था उसने ज्वाइन करा, उसने तो बहुत ही मिरेकल कर दिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता उसको। हमें हम जैसे लोगों के बारे में पढ़ाओ, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि हम शुरुआत इंस्टीट्यूशन में करें तो इस तरह की चीजों की कर सकते हैं, जिसका एक बार शुरुआत करोगे, कुछ सालों के बाद आपको बहुत बड़े इम्पैक्ट नजर आए। इम्पैक्ट पहले नहीं नजर आते, पहले कोशिश होती है, फेलियर्स भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पहली बार सक्सेस होते, लेकिन रिजल्ट्स भी आते। इनका क्या था, सोल्जर थे, अक्सर आपने सुना होगा सोल्जर्स को छुट्टियां मिलती है तो एक महीने की सीधा आते हैं, पूरे साल वापस अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो ये अपने गाँव आते थे। मध्य प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ गाँव, बच्चे किसी जैसे वो ईट जहाँ पकती है, भट्टे पे काम कर रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जाता था तो उन्हें बड़ा दुख होता था। उन्हें लगता था कि हमारी जिंदगी तो जैसे ही कट गई, क्यों ना इन बच्चों को स्कूल में लाया जाए। 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया, तो छुट्टी में आते, बार बार जब वो जाते हैं उसके आसपास ही बच्चे फिर वापस उसी काम पे, क्योंकि बहुत गरीबी थी। वो वापस जा रहे थे, एक बार बस में बैठे थे तो मैगजीन जैसा खरीद लेते, 5-10 रुपए की, कोई बेच रहा था, खरीद ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनके अंदर एक खास बात थी कि वो दोनों हाथों से लिखते थे। 3 इडियट्स में भी देखा होगा, मूवी देखी हो तो आपने, जो डायरेक्टर था दोनों हाथों से लिखता था। लेकिन दोनों हाथों से लिखने का तरीका क्या होता है, साथ में ही लिखा जाता है, एक जो लेटर है एक हाथ से, दूसरा दूसरे हाथ से। तो उसे ना, उन्हें ना ये आइडिया बड़ा यूनिक सा लगा। उन्होंने जब अपनी ड्यूटी पे चले गए, खाली टाइम में 3 महीने प्रैक्टिस की, दोनों हाथों से लिखी। फिर छुट्टी पर आए, उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया कि अब मैं बच्चों को ना दोनों हाथों से लिखना सिखाऊं। कुछ बच्चे आए, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा, अब उनका स्कूल चल गया। फिर उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट हो गए। अब ये स्कूल ऐसा है कि उन्हें वर्ल्ड लेवल पे काफी प्राइज मिल चुके हैं। उन्हें इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसे केस स्टडी पढ़ाया जाता है कि उस एक इंसान ने जो टीचिंग बैकग्राउंड का भी नहीं था, लेकिन एक अच्छी इंटेंशन थी, कुछ करना चाहता था और ऐसा कर दिखाया। और कोई 5 स्टार स्कूल भी नहीं है, वैसी बिल्डिंग, वैसी फीस जैसे होते हैं गांव में, लेकिन आइडिया ऐसा है कि आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की बिजनेस रिव्यू वाली जो मैगजीन्स है, वहां पर केस स्टडी पब्लिश हुई है, वहां पर लोग पढ़ रहे हैं। तो छोटा मोटा काम पर है का हमारी कंट्री में। और अब तो इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है कि आप सर्च तो कीजिए कि लोग कर क्या रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी कीजिए कि ऐसी जगह को विजिट भी किया जा सकता है। हमें जब ऐसे लोगों को पढ़ते हैं तो आइडियाज आते हैं। हमने 10 लोगों को पढ़ा, किसी एक का आइडिया क्लिक कर गया, हम भी वैसा कर सकते हैं, दिमाग में आता है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है, जब कर ही नहीं रहे, तो फिर हमारे भी दिमाग में आइडियाज नहीं आते। इसके अलावा इन्होंने तो बहुत ही छोटा सा काम किया था। इन्होंने क्या किया था कि किसी साइबर कैफे पे आते थे अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर, कोई पैसे नहीं दे रहा है इनको, बस एक प्राइमरी टीचर थे, लेकिन इनको ये था, इन्होंने 1st से 10th तक एनसीईआरटी की किताबों को क्विज में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कौन बढ़ेगा करो। और क्विज में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट हुआ, वेबसाइट बना दी उन्होंने कि बच्चे उसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा डेवलप कर दिया। आप सोचिए, वेबसाइट बना दी,
अब लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे भी उससे जाके अगर कुछ सीखना चाहे तो आसानी से सीख सकते हैं। अगर यही कहीं कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में होता तो इसी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए लग जाते। उन्होंने कुछ ही सालों में या महीनों में ये काम करके दिखा। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक तरह से एग्जाम्पल है आपके सामने कि इंडिविजुअल क्या कर सकता है, इंस्पायरिंग टीचर क्या होता है एक्चुअल में, और एक इंस्पायरिंग टीचर को देख के ही बाकी लोग इंस्पायर होते हैं, और कैसा कैसा लोगों ने किया है और किस लेवल पे किया है। कल परसों में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हिंदी का न्यूज़पेपर घर में आता है, दैनिक जागरण, ट्रम्प्स यू-टर्न ऑन H-1B वीजा, वी नीड टू ब्रिंग इन पेरेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब मेरे को ये न्यूज तो अच्छी लगी क्योंकि आपके टॉपिक से कनेक्ट कर रही है न्यूज कि देखो इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, अपने बच्चों को एम्पावर करें, सब कुछ करें, ये ज्यादा सैलरी देके अपने देश में बुला लेते। तो हमें कुछ पॉलिसीज में ये भी करना पड़ेगा कि जब हम ये सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं और विकसित भारत की बात कर रहे हैं और विकसित हमें ही होना है, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के क्यों बाहर की कंट्रीज में जाए, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज, अपने में ही रुके, यही कंट्रीब्यूट करें। और इतना सेंस हो नहीं कि अगर वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा दे भी रहे तो एक नेशन के प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सेल्फ के बारे में नहीं सोचना, उस तरह की कुछ चीजें। इसके बाद है फिर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा काम कर रही है कर्नाटका के यादगिर डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने तकरीबन 1200 के आसपास अपने स्टूडेंट्स और टीचर लगाए हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, और जहां पर लर्निंग गैप्स है स्टूडेंट्स के, खासकर प्राइमरी लेवल पे, उसको हेल्प करते हैं। वीक में 1 या 2 डेज क्लासेस लेते हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, उससे एनरोलमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, जिससे कि हम पहले शुरू में बात कर रहे थे लिटरेसी कैसे बढ़े, वो इम्प्रूव हो गया। उसके अलावा बच्चों में जो लर्निंग गैप्स थी वो भी इम्प्रूव हुए। पीसा टेस्ट की जो मैंने बात करी, अगर आज हम अपने 15 इयर्स के बच्चों का दें तो 15 साल के बच्चों का जो एक तरह से कहूंगा मैं फंक्शनल लिटरेसी वो 10 साल के बच्चे के बराबर है, जबकि वो 15 इयर्स के बराबर है। ये जो गैप आ रहा है इसको कवर करने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, जो प्रोजेक्ट्स है, या हमें अगर एनईसी कहीं ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई आप खुद से कोई चीज बना के क्रिएट कर सकते हो, तो हमें चाहिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए अपने सिस्टम में जो जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर रही हो, सिर्फ नंबर देना नहीं काम, लर्निंग किसी की भी नहीं। और लास्ट स्लाइड है क्योंकि आप काफी देर से सुन रहे हैं, मुझे तो सोच रहे होंगे अभी कब होगा। ये बड़ा मजेदार केस स्टडी है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी पब्लिश हुई। आप देख रहे होंगे पीछे मेरी स्क्रीन पर कि किस तरह का कॉलेज है, कोई 5 स्टार कॉलेज नहीं है, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्कूल में इसको पढ़ाया जा रहा है, इसकी केस स्टडी को, जबकि यहाँ की 5 स्टार यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ऐसे क्या ताकत है इसमें। बेयरफुट कॉलेज पुलोनिया, एक कम्युनिटी एंगेजमेंट केस स्टडी। इन्होंने सबसे अच्छा काम तो क्या करा कि जो ग्रैंड मदर्स होती है उनके लिए 6 महीने का सोलर इंजीनियर का एक प्रोग्राम शुरू किया। सोलर एनर्जी में जितने इक्विपमेंट्स हैं ठीक कर लिया। और पिछले अगर मैं बात करूं 2020 से और 25 के बीच में, तो तकरीबन इन्होंने 1800 वुमेन को ट्रेन किया। और सबसे अच्छी बात क्या है कॉलेज की जो नजर आ रहा है, इन्होंने 93 कंट्रीज की लेडीज को ट्रेन किया। अब आपको क्या इंटरनेशनल है तो नजर नहीं आ रहा, किसी भी बिल्कुल गांव का टूटा फूटा सा कॉलेज नजर आ रहा है। वो वुमेन जो आसपास के विलेजेस की है 12,000 रुपए 15,000 रुपए महीने कमाती है, क्योंकि वो एक तरह से इलेक्ट्रिशियन टाइप बन जाती है और जो सोलर से चलने वाली चीजें हैं। और ये कौन कर रही है, जो ग्रैंड मदर से ज्यादातर उनको ट्रेन कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और मजे की बात जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे केस स्टडी में, हम लिटरेसी की बात कर रहे थे ना, इन्होंने एजुकेशन को रखा कि जहां लिटरेसी की जरूरत, अगर आप लिटरेट नहीं हो, साइन लैंग्वेज से कैसे भी हम आपको सिखाएंगे और इस काबिल बनाएंगे कि आप अपने लिए कुछ कर सकते। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे यही है। हमको बाहर वाले लोग और ऐसे लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
तो वो पढ़ के अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है, यानी कि हम बाहर खोजने जा रहे हैं कि वो क्या बेहतर कर रहे हैं और फिर हम करें, जबकि वो हमारी बहुत सारी चीज, 2 एग्जाम्पल तो मैं दे चुका। ऐसी 100 केस स्टडी हो सकती है, मेरे पास बहुत है ऐसी, मुझे जो ठीक लगी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो ये कुछ बातें थी समझने और समझाने के लिए, तो विकसित भारत की तरफ को अगर हम बढ़े तो तरीका क्या हो सकता है। लास्ट में हमें पता है कि इंडिया की क्वांटिटी ज्यादा है, वैसे भी नंबर्स में भी, और हमारी जो एजुकेशन अभी क्वांटिटी में चल रही है। कितने बच्चों का एनरोलमेंट हो गया है, हम एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में इतना कर देंगे, लेकिन क्वालिटी, पीसा टेस्ट, फंक्शनल लिटरेसी या फंक्शनल नॉलेज जिसमें कि कुछ अप्लाई करके सॉल्व करना प्रॉब्लम को, उसका भी अता पता नहीं। जीडीपी 6 to 8% हो, 100% टीचर्स ट्रेनिंग हो, आउटकम बेस्ड जो है रिफॉर्म्स। आउटकम बेस्ड का मतलब जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल दिए कि ग्रैंड मदर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो जाके अर्न कर रही है, उस इंपैक्ट को आप चेक कर सकते हो जाके, हाँ फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि फाइल बना के लाओ और फिर वो रद्दी में भेज दी जाती है और बच्चों को बहुत अच्छे नंबर मिल गए और वो डिग्री लेकर खुश हो गया कि मैं एजुकेटेड हो गया। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for sharing your enriching insights and widening our perspectives. As we prepare to welcome our guest of honor, let us remember the true measure of a scholar is not in the positions they hold, but in the life they illuminate with knowledge. With this thought, we would like to welcome Dr. R.S. Yadav, Professor Emeritus at Jain Vishwabharati Institute, Ladnu, and former Vice Chancellor of Baba Mastanath University, Rohtak. Sir has held several prestigious academic and administrative positions, contributing immensely to higher education and social sciences. His exemplary leadership and scholarship continues to inspire generations of educators and learners alike. Let's all welcome him on stage with a great round of applause. Madam Principal, other fellow friends in the dais, and former registrars, faculty members, and dear students. It is really a matter of honor for me that you have invited me to this prestigious institute to share some of my random thoughts on the topic Viksit Bharat 47. So I really love to come here, though number is less, but still, if the listeners are good, then you can definitely across your ideas. So 3-4 things I will share as per your theme of the seminar. First thing, that why this question arises after so many years and more than 70 years of learning, that we will wish to be developed country when we are completing the century of our independence. Because we have number of potentials. Potential in terms, if you take demographically, we are top of the world with 1.46 billion population, having 65% population below 35 means youth. That is critical. Economically, we are the 4th largest economy in the world. Geographically, we are 7th largest country in the world. Politically, we are the largest democracy,
having experience, are the only third world country having so long critical experience of democratic system. Militarily, we are having both soft power and hard power capability to the level of the developed world. And also, we are a nuclear power, and we also have a huge manpower and infrastructure in science and technology. So this is the list is too long. That with this potential, definitely one can aspire to. But as I look into this is the potential, not actual. So how to actualize this with all these? We are still in the underdeveloped world. It means there is something missing, that we fail to convert this possibility into actual. So our purpose of being a developed country means we have a huge potential in all areas of science, technology, economy, politics, society, but still we are lacking, means that we have to actualize that this transformation is possible only through education. Education theory, but as Dr. Sanjay has said, theoretical as well as practical, theoretical as well as functional, practical as well as critical. And not only mere numbers, but qualitative. So education plays a huge role. So the purpose of holding this seminar is to investigate that despite all these positives, in between, that we are not able to convert ourselves in more than 70 years of experience of independence, that to stage of development. This is one. Second thing, if I look at that, if we look to the education, it is only reflected in the two ideas of the Viksit Bharat. One is NEP 2020, that gives a broad framework that how we have a future vision of education. And another is the declaration of Viksit Bharat 47. If you mix these two, then comes the real of the three issues you have raised about the teacher, student, and community. If you look to the NEP, NEP is a huge detailed document prescribing number of things. Some Dr. Sanjay has referred, some other I may add. He talks about the multidisciplinary coursework, technology-oriented coursework, skill and vocational knowledge should be preferred. Universal and inclusive means in totality your own segment. Having fixed up the range also, GRE, gross enrollment ratio should be, for the higher education it is set at 50% by 2035 and 100% of preschool by 2030. 2030 just coming up 5 years. This was the ratio. They have also talked about the teacher training and also particularly a program, NETF, National Education Technology Forum, where the teacher can give new ideas and how those ideas will be translated or promoted. That was given. And they are also talking about the examination reform, and one very idealistic perception of assessment is given per, that is given that the key values means performance assistant review and analysis of knowledge in a holistic development. These are very loud words, and if you calculate in reality, it is very difficult that how a teacher having a number of students of 50 or 100 in class, each one aspect needs whole in-depth study. That is why Dr. Sanjay has said that ratio in developed world is 30 students, or in IIT, NIT, IIM, the ratio is quite less as compared to. But here, if you have to teach and then you say holistically, you can involve about the performance, assessment, review the analysis, knowledge,
all these things of each and every student. To say is something easy, but to translate is very difficult. And also, they promise 6% as it has been promised even last 20, 30 years. But still, as Sanjay said, last budget was 4.6% of the GDP. So 6 is also very less in terms of India's population and the catering of the students. This is the broad view of any country. In Viksit Bharat, they have focused on 4 things: youth, poor, women, and farmers. Particularly here, we are related to the youth because youth is connected to the teacher student. And the 3 things are to community. We can club them into community because the poverty level and the women's empowerment and the farmers upliftment, this is a community issue. But here also they have given very drastic objectives. 100% they talks about the education which will be quality and affordable. I don't know how they will do it, that will come later part. But they have promised zero poverty level. They have this vision of zero poverty level by 2047. They have also said 100% skill employment. 70% of women in the economic affairs. And farmers should be looked like food bowl of the world. These are the things. So very idealistic, even to the extent I can say utopian kind of idea. Translate them, what is going on, what is projected. So this is the second thing which I wish to share this morning. That this is the broader vision of Develop India has been conceived by the government through NEP and through your Viksit Bharat schedule. Now comes the third point. Now we have to draw the implication on 3 issues which you have referred. That about teachers, students, and community. About the teachers, Dr. Sanjay referred to the inspiring examples of the teachers. But I feel this is inspiring, is individualistic kind of things which you will agree that individual teachers have taken initiative. But in the policy, if you look at, it is a more challenging and innovative scheme for teachers rather than inspiring. Because policy is not inspiring in any sense of the term. It is the kind of the policy which is given that is a more challenging and innovative teacher need to be. Why? Because first of all, teacher have to integrate with technology. Those who are science teachers, those who are computer teachers, they know well. But some teachers come from social sciences, some come from the languages, some come from physical education. To what extent they would able to? We have not designed their course like that every teachers become technology friendly. So digital pedagogy they have to create, and also online learning platforms, virtual classrooms, remote mentoring, and knowledge of new tools like Meta, AI, and other technologies which are coming. Development of the SWAYAM portals, also updating the skills in all the technological areas, adoption of global best practices. This is also interdisciplinary knowledge. These are the challenges rather than inspiring. Because all teachers cannot equip itself because their training were different. How they were trained during their graduate or postgraduate or in their B.Ed courses, that is totally mismatching. So first you have to train those, then you can impose. So this is the very biggest challenge with the teachers, that how they can become digital, technologically oriented in such a short span that they convert the society and students to the level of the development. Second is also they have to update their knowledge and skill continuously.
this is a big challenge that you cannot remain stagnant or remain with all the knowledge which you have acquired. You have updated your skill day by day. And the kind of change which is coming with this technology is so fast. Earlier, when we were doing PhD and research, the problem with the scarcity of material available. Now the problem is plenty of material available. How you can handle that? That is the problem. Because of one click of the mouse, you can get everything available in the world. Most of the things available. So teacher have also to update. Because otherwise your student will on your mobile and they will cross check and they will question you that this information is wrong because this is the right. And a GPT is another challenge the teacher has to handle. So a teacher has to be ready for everyday updating skill. This is the second challenge. Third is even very essential but cumbersome like process of work. How you can assess each and every student on this parameter is very tedious. So it is very difficult to say that you have a new module, a new division, because that requires a small number of students, integrated class, intensive reading, and also the infrastructure available for the teacher also that they could interact with a smaller group. If that is not there, if you have to teach the whole class, particularly when I joined the university services, the undergraduate classes of 100 or 150 and you have to speak without no mic and nothing else. That was it. So how you can check on each and every individual is that is. And also participation on this national technological forum to give new ideas because the kind of paperwork assigned to the teachers these days are so huge they cannot find any time to update or generate new ideas. And even all the government policies and schemes have to be monitored and to be assigned mostly to the teacher. They should collect this data, collect this information, make this every time this kind of change. So this kind of scenario which you are exposing, which you are thinking for 2047, but the kind of teachers challenges to handle those are so huge. So how you match it, this is the biggest challenge of it. Now coming to the students level, you say empowering the student, empower the students. How empower? They say that various initiatives by the government, that the youth parliament is there, VO youth portals are also where you can share. Also Viksit Bharat Uniform is there where the youngsters can and they could do. But most of the thing is that you have to develop your skill with technology, with hand-on practice. But what I fail to understand that until unless you are master of your own trade, you become the jack of all trade and master. Because super specialty come after your master. But if you are, because this is the time when specialization and super specialization, but basic should be confirmed, basic should be very found. So you have more oriented to, and that is why for the last 2 years I am visiting 3-4 university as a visiting professor, and I am shocked to share with you that no student is purchasing books in master's. They are relying on GPT and mobile and internet. That is all. This is information, this is not knowledge. And if you have knowledge, you can best use this information. But if you don't have a knowledge, don't have perspective for how or which purpose you want to use, then so skill doesn't mean you have smart boards and you have all electronic gadgets and all these things in the class. This is all providing you information. But teachers can provide you the perspective. And how to mix up them, that is the big challenge. So mere on A portal or B portal, going to the students and carrying all this orientation and having this holistic assessment, and then you feel that student is empowered.
I think he became more aware. He became more informative, no doubt. He knows various things, but basically his grounding on the concept of basic discipline is not that sound. So a student first has to be sound in its basic parameters, and then if your device is good, then building will be excellent. If your device is based on all these segregated elements, this is what we do. Our students are knowing lot of information, but how to coordinate that, how to present that, how to make them result oriented or outcome oriented, and every student cannot be entrepreneur. Every student cannot be excel. Every student has a different types of innovative mind. They can be, some could be good doctor, but some could not. Some could be good farmers, some could be good entrepreneurs. So that kind of variety should remain. That fundamentals you need, that's the ideas with and with the coming of technology, they can empower. But through portals and all this, you can make them more informative, more aware, rather than knowledgeable. That is the big challenge. And third, you said about the community, that how you enrich the community. And in community, I said, what is the goal? I doubt it. Because goal is that 70% of women will be involved in economic activity, 0% poverty by 47, nobody will be poverty. And also, you said that 100% inclusive and quality education. These are the things. So I think empowerment means you can empower with social inclusion through the universal education if you really provide. If you provide really to the 100% what your objectives are there. And also economic skill through various skill programs are there, within India, other things, Digital India, and skill universities, Kaushal Vikas, all these things are there. That could be competitive. But I think this is a theoretical very sound. Looks very beautiful because we will become 100% literate, we will become develop every 0% poverty, nobody will be poor. But I think challenges are far more than what we perceive in terms of the objectives by the NEP. The challenges are number one is gap in theory and practice. Some Dr. Sanjay have already referred. Again, I refer because what kind of investment you are doing for attaining those objectives. Investment is 4.6% you said in the last budget. 6% is your highest target for the last 20-30 years for education. If you look at the world, they are spending 6% by the US, so 4% by China, but you have to compare the size of the economy. We are 4 billion economy, American economy is 7 times higher than nearly 29 billion. So means if they are 6% multiplied by 7 times, that comes to the 42% of your expenditure on your education, what the US. So how you can visualize that kind of development with so much money? China is spending 4%, but their GDP is 5 times higher than India. 90 billion. So 5 times means they are spending 20% of the what you are spending on your. Similarly, about R&D, research and development is a zero in the country because most of the things, even one sector is very developed, IT. In IT also, whatever the using in your computer, it is the Windows, the Microsoft or a Google or somebody else, no Indian platform or to that level that world is utilized. Because what you are spending on R&D, 0.6% of your GDP. So you are all what doing is assembly. What your companies are doing, you are
making iPhone, you are making all these things, but they are assembled, not manufactured. So because your R&D is very poor. And long term, if you want to develop, because why China can dictate terms to the US and it cannot? Because China has created dependency of US on number of things. Why we are dependent on the developer? Because the technological advancement they have, the, that makes us dependent. We are doing assembly, not manufacturing. So because R&D is very good. So the gap between, you are visualizing very high ideals, but practically you are not investing to the level required. So if you want to the education or to the country development to that level, you have to perceive the higher, because our population is so huge. Our youth are so numbered, and still you are investing such a meager in terms of education, also in terms of R&D. Secondly, I think you are creating duplicity of the things also. You are saying Skill India, Make in India, Digital India, number of, I forget, if you go on any government site, you will find number of these kind of initiatives. But we already have a background. Why to waste that? You have ITI, you have polytechnics, you have NITs, you have IITs, you have Indian Science the Congress Board Association Bangalore, you have IIM, you have MSMEs, you have a number of things already. What will be that they do? You are creating all these things. Apart from that, means what? Either duplicacy or you are repeating the same thing. Old wine in the new bottle. So that was not the waste. Your IIM, your IIT, your NIT, ISC, they stand globally. So why to disrupt that? You have to support those institutions which are weaker, rather than give every time you give slogan. Sloganing will not work. What practical will do? You have said Kaushal Vikas, Skill India. What your MSME was? Basic purpose of MSME was to develop the small and medium scale industry manufacturing hub in the country. You are ignored. You have created another department. You have created another university without infrastructure. Day on and day forth, new university are being opened without faculty, without infrastructure, without assessment. So that duplicity will not. That is also the challenge. You have to strengthen those who are already remarkable, not to discard that, and you have to create new, which are required in new areas, rather than making it. Third thing which Dr. Sanjay has explained to you, digital divide, about the rural urban divide. You have good facilities, computers, digital, internet, all these things, but are they available to the all population? He has given a very grim picture that how a number of rural areas, all these facilities are nowhere. Some lights is not there, some computer is not there. If they are once purchased, they remain redundant because updation is not possible, money is not given, not updated. They are just the boxes lying in the school room. If there is computer, teacher is not appointed, teacher is not. So there is a huge divide. So with this division, how you can say inclusive and quality education, this is the slogan you are given. Because that cannot be until unless we create a parity to all the students about the infrastructure, about the availability of the resources, about the availability of the all technologies. You cannot talk about that. Another challenge is the amalgamation of discipline, which I have also referred, that you are saying not interdiscipline. Interdiscipline is good. If I am a student of A discipline, I should know B, C, D also. The implication of that restricted to yours. But now they are saying amalgam.
You can study one paper of arts, another paper of commerce, another paper of science. You can take physics, you can take music, you can take math, you can take history. How? Means jack of all trades, master of none. This is not possible. This is the era of differentiation. Differentiation means separation and specialization. Because in medicine, if you go, nobody these days talks about the MBBS. Some say MD or MS. Then also come in which area? Super specialty. Because science has progressed a lot, and you have to keep pace with that progress. And if you mix in a bag full all the things, then definitely nobody will be master of anything. You will get a degree, but you don't know whether you are a graduate of music or graduate of physics or graduate of history or graduate of English. You don't know because you have studied all things in a way. So this amalgam is not required. Basic specialization is still required. Then you can have a higher specialization, whether in technology, whether in medicine, whether in any other area. Without the base, you cannot be master of that subject. So your mastery of that subject, one subject, must be there. Then you can have interdisciplinary approach, taking clue from other subjects also. So enrich your discipline. That also taken to enrich your discipline, other than to have more study about other disciplines. That is also there. And enriching community is also a very crucial mark. Because what we are doing is we are enriching through another way, that is freebies. Give this much to women, this much to farmer, this much to student, this much to this community, this much to that. Means we are brutalizing the society. We are making them parasites. This is not empowerment. If you give 5,000, 10,000 to an individual, and that's over, you see that is empowered. That's not. If you give 6,000 to the farmers, that means the farmer becomes rich. No. Give MSP. Link with productivity. Link with job. Link with the creativity. Then that facility. Even if you have reservation, there also you link with the progress of the student, progress of that employee, progress of that person, so that productivity can be enhanced. And if you cannot enhance your productivity, then there will be freebies and loss. And freebies now have come to that extent, even sometime in election, you are seeing the recent election happening in Bihar. Then more than the state budget, they are all parties across, all are similar. They are announcing so many benefits, which is beyond their budget. Nobody could imagine. So is it a quality transformation? This is how you want to make India a Viksit one. So all have to sit together. All have to think that this is money is scarce in the poor country, and if you do like this, what will be left for development? After election, what will be left for development? Nothing. So what are your ideas are? So you have to enriching community through decent means, through all means. And about the last thing about challenges of youth is that through number of studies we have come across when the engineering college was opening en bloc, then says that most of the students, engineers are not workable. They have not functional knowledge. Similarly, he has referred to about the teachers. Similarly, about the other fields. They have degrees but not knowledge of that level. So your youth is a positive phenomenon. It's good that India has 65% of the youth in the world. But how you convert that youth into human resource? If that youth become a resource for the nation, then you definitely will become a developed world. But if that youth is not converted into resource, just giving them the degrees without the functional knowledge, that cannot be. India cannot think of. So what are your objectives and how you are
making journey, your trajectory is not leading to the objective which you have assigned in any year. Until this mismatch is there, India cannot become even after more 50 years. Because you have to match your trajectory with the resources, with your development process, then you will reach your view. If you want to go to Delhi and you start moving to this side, definitely you will reach somewhere else. Or you will reach after few hours by going to the eastern periphery or to this part or that part, whatever, wherever you reach, you don't know. So your trajectory should match the objectives. That mismatch is glaring. So need is, first you have to draw a roadmap, step-by-step development, and the level of achievement at every step should be. And this roadmap can be there only if you first make an assessment how much population will be in 2047, how much doctors will be required, how many engineers will be required, how many teachers will be required, what will be the status of the economy, how many enterprises will be there. Or you have to assess categorically, statistically, that this will be the projection for that year. And how to meet that projection stepwise formulation should be charted by a policy. Otherwise, if you don't do that, then no doubt India has the potential, which I referred to very quickly. India is the largest economy, youth population, territory, power, military power, hard power, soft power, nuclear power, everything is there. But unless you utilize your potential in terms of your trajectory design, India cannot. So you have potential, but for actualization, India has to think about the challenges in the field, then your education will translate in terms of your teachers, students, and community building process. Otherwise, the things may not be done right. That's all. Thank you very much. Thank you, sir, for your scholarly and inspiring words. To present the report of today's national seminar, I request Dr. Ritu Rani ma'am, the seminar convener, to kindly take us through the key highlights and academic outcomes of the event. Please welcome ma'am with a warm round of applause. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Ritu Rani, presenting the report of this national seminar in front of you. National seminar on the theme Education for Viksit Bharat 2047, inspiring teachers, empowering students, and enriching communities with 10 sub-themes was organized by IQAC cell of Army Institute of Education, Greater Noida on 13-14 November 2025. The first aim of the seminar was to share ideas, research findings, innovations, and new strategies for making Viksit Bharat 2047 through education. Second aim was to encourage dialogue among educators, policymakers, researchers, and stakeholders for strengthening the entire education system of India. The first day commenced with the inaugural session of the national seminar with a traditional Saraswati Varna to invoke blessings for the event. This was followed by the felicitation of the seminar's distinguished guests. Dr. Abhilasha Valla, Principal of Army Institute of Education, warmly welcomed all guests, participants, faculty, and students. The seminar continued with an opening address from Major Nagraj Dhillon, Visis Seva Medal, COS Delhi area, and Chairman Army Institute of Education, who offered his best wishes
The session's chief guest, Professor Dhananjay Joshi, former Vice Chancellor, Delhi Technical Teachers University, and presently Professor at USE GTSIT University, joined virtually to explain his views on the theme of national seminar. Dr. D.D. Agarwal, retired Associate Professor of DU, delivered the keynote address. Multiple papers were presented in 4 technical sessions, sir, 3 in offline mode and 1 in online mode. Chaired by Dr. D.D. Agarwal sir, Dr. Sarita Verma ma'am, Dr. Avilasha Gautam ma'am, and Dr. Paresh Lata, Associate Professor, G.D. Goenka University. Gratitude to the dignitaries, participants, and paper presenters was shown through vote of thanks by myself as the convener. Day 2, that is 14 November, witnessed the valedictory session where we had the opportunity of listening to our revered chief guest Dr. R.S. Yadav sir, Professor Emeritus, Kurukshetra University, and former Vice Chancellor Baba Masnath University Doctor. Sir, we all have benefited from your word and wisdom and insight. Thank you, sir. Our next speaker, Dr. Sanjay Kumar, President CTPG India, is a pillar of strength as we have organized this seminar in collaboration with CTPG India. Mr. Gajanand Mali, founder 10 News Network, had extended his full support in successful culmination of this seminar. Sir, total 150 participants have gained insight through this seminar, both as participants plus paper presenter. Overall, this seminar had provided a platform where all scholars had come together to learn and gain insights through the academic collaboration. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for beautifully encapsulating the essence and achievements of the seminar. As we approach towards the conclusion of this enriching national seminar, it becomes essential to acknowledge the collective efforts that made today meaningful and successful. To extend our heartfelt gratitude, I now request Ms. Priti Guleria ma'am to kindly come on stage and deliver the vote of thanks. Please welcome her with a warm round of applause. Thank you, Lucy. Good afternoon, revered guests, dignitaries, eminent educationists, paper presenters, and participants. On behalf of Army Institute of Education, Great Noida, I extend a hearty vote of thanks to each one of you for gracing the national seminar. At the outset, I place on record my sincere gratitude to Dr. R.S. Yadav sir, Professor Emeritus, Kurukshetra University, and former VC, Baba Masnath University, Rohtak, for his motivational presence and insightful words. The academia has so much to learn from you, sir, and thank you for guiding us all. Warm regards to Dr. Sanjay Kumar, President CTPG India, and Principal, Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad, and Dr. Gajanand Mali sir, founder 10 News Network, for enlightening the audience through their deliberations. Our gratitude to dignitaries of Day 1 of National Seminar, guest of honor Dr. Dhananjay Joshi sir, former VC, Delhi Teachers University, New Delhi, for his gracious online presence in the event and words of wisdom. Professor D.D. Agarwal sir, Associate Professor, University of Delhi, New Delhi, and Professor Sarita Verma, Professor in Charge, School of Education, Chartered University, Great Noida. Along with Dr. Paresh Lata ma'am, Associate Professor and Head, Department of Education,
School of Liberal Arts, G.D. Goenka University, Gurugram. A special mention to our former registrar, Colonel Abhay Rajanji sir, for his motivational presence amongst us. Management support is instrumental in success of the event. I take this opportunity to convey our deep regards to Major General Navraj Dhillon, VSM Chief of Staff Delhi Area, and Chairman AIE, to give us a chance to conduct and organize such events with parents. We are thankful to the participants. Your presentations and active participation made it a greater success than envisaged. My sincere reverences to Dr. Abhilasha Gautam ma'am, Principal AIE, for her unstinted support and guidance in the organization of this event. Special mention to the convener of the event, Dr. Ritu Rani ma'am, who had worked tirelessly towards the successful conduct of the event. Heartfelt gratitude to Team AIE, including faculty and non-teaching staff, who had worked day in and out to make this event a big success. Finally, I thank all the young and energetic students, committee members, and volunteers for their invaluable contribution. I once again express my sincere thanks to all of you who have come here to be with us today, and we have a firm belief that message emanating through the discussions leaves a permanent imprint for our personal and professional development. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for appreciating our efforts. I now request the faculty to gather for a group photograph with the dignitaries. Thank you so much. Certificates are not just acknowledgements, they're a reflection of sincere effort, dedication, and meaningful contribution. Today, we take this moment to appreciate all those who have actively participated and enriched this national seminar with their presence. I humbly request our guest of honor, Dr. R.S. Yadav sir and Principal Ma'am, to kindly come forward and felicitate our participants with certificates. As we announce your names, we request all the participants to come in front of the stage and receive your certificates. Vishnu Singh Shekhawat and Ms. Tanya Batra of Amity University, Noida. Yashwata Gupta and Dr. Jayanti Pujari of Amity University. Thank you.
Rishika Sharma and Dr. Ram Shankar Saxena of Amity Institute of Rehabilitation Sciences, AIRS. Amen and Dr. Anusuya K. Yadav from Amity University, Noida. Zainab Fatima of Jamia Millia Islamia. Ankita Chauhan, Dr. Ram Shankar Saxena from Amity University, Noida. Muskan Khan and Dr. Arun Kumar from Amity University, Noida. Preeti Kumari and Mrs. Seema Salim from Amity University. Madhuri Bhardwaj and Dr. Jayanti Pujari. Dipanshi Sharma and Mr. Saurabh Kumar Mishra from AIRS. Harshal Banodha from Dayal Education Institute, Agra. Ashish Ranjan, Simranjeet Kaur and Mrs. Saloni Arora from Army Institute of Education. I would like to request Dr. Sanjay Chaudhary sir to also join for felicitation of our participants. Next certificates are for Technical 2 session. Aradhna Chaudhary, Dr. Arun Kumar, AIRS. Kushi Jain, Dr. Ram Shankar Saxena, AIRS. पीछे कर दो और को पीछे कर Tushara Vanya Haq, Ananya Bhattnagar, Dr. Ram Shankar Saxena, AIRS. Bhavna Tokas, Dr. Ram Shankar Saxena, AIRS. Richa, Jamia Millia Islamia University. Mohammad Tehni, Seema Salim, Amity University, Noida. Khurram Shah, Jamia Millia Islamia University. Dr. Tawfiq Aram, Jamia Millia Islamia University. Prantika Bhattacharjee, Amity University Rehabilitation Sciences. Leader, Dr. Raisa Khan, Jamia Millia Islamia. Raina Banerjee, Payal Sharma, Mehak Yadav, AIE. Next we have technical session 3, online mode. Ishika Sharma, Ms. Jyoti, Rukmani Devi Institute of Advanced Studies. I would also like to request Mr. Gajanan Mani, sir, to join the felicitation of our participants. Piyush Malik, Ms. Jyoti, Rukmani Devi Institute of Advanced Studies. Shreya Dhanuka, Ms. Jyoti, Rukmani Devi Institute of Advanced Studies. Baharka Arora and Ms. Devi, Rukmani Devi Institute of Advanced Studies. I now request Colonel Abhay Rajvanshi sir to also join them for felicitation of our participants. Shanti Chaudhary, Dr. B.R. Ambedkar Award. Pranali Conwell, Dr. Seema Agnihotri, Amity University of Education.
Dr. Kalpana Gupta, Anushka Tiwari, DAV College, Kanpur. Vanshika Mohammed Shaki, ND University. Ms. Sarla Devi, IGNOU. Dr. Samya Shah, Noida College of Physical Education. Kavita and Dr. Umrendra Malik, MD University. Swarnalata Sharma, Baba Amarnath University. Asha Kumari and Diksha Shikarwar, APS Kanpur. Now, the certificates for technical session 4. Ms. Veena and Mr. Saurabh Kumar Mishra, AIRS. Ayushi and Dr. Jayanti, MIT University, Noida. Ms. Ritika Kanswal, Dr. Sampurna Guha, AIRS. Chaya Pandey, Mr. Saurabh Kumar Mishra, MIT University. Ms. Rohaniya Sanwar, Professor Jayanti Pujari, MIT University. Ms. Kanchan Nagar, Dr. Sampurna Guha, MIT University. Shikha Chauhan, Dr. Ansuya K. Yadav, MIT University. Ms. Harpreet Kaur, Ms. Parul Walia, MIT University. Ms. Rajni Kashyap, Dr. Arun Kumar, MIT University. Priyanka K. Anusuya Yadav, MIT University. Ms. Palak Gambhir and Dr. Jyoti Tiwari, MIT University. Deepika Bisht and Ritika Kaushik of Army Institute of Education. Meenu Chaudhary, Daya Yadav, Anuja and Rajaram Patil. Manju K.N., Shruti Kotyan, Ranjita Arida. Janalvi Borgohain, Rumi and Muskan. Priyanka Rai, Vishaka Chauhan, Preeti Kumari. Meenakshi Dwivedi, Anisha Kumari, Ritika. Kavita, Lakshmi, Shraddha. Manju, Kiran, Rohi. Anjali, Anushka, Vaishnavi. Ankita Samiksha, AIE. Neha Rajni, AIE. Now, I request the dignitaries to felicitate our faculty for their hard work. I would like to invite Dr. Ritu Ma'am, seminar convener, to receive her certificate. Ms. Kriti Guleria Ma'am. Dr. Yogesh Kumar, sir. Ms. Komal Chaudhary, ma'am. Dr. Amandeep, ma'am. Ms. Saloni Arora.
request the non-teaching staff members to receive their certificates for their unwavering support. I would like to invite Ghanshyam Singh sir. Singh Homer sir. Harish Gangwar sir. Manoj Kumar sir. Indipal sir. Rajan ma'am. Farini Rana ma'am. Sendra Kumar sir. Ashit Kumar sir. Mandeep Sharma sir. Rakesh Kumar sir. And Ravi sir. Agarwal sir. I would be like the AI volunteers to teach their certificates. Ashish Ranjan, Harima, Pooja Kumari Specialist, Khushbu Kumari, Kudum, Raina Banerjee, Anshul Bharati, Vaishnavi Pawar, Kavita, Anshul Kandari, Vandana Tripathi, Shefali Desai, Sandeep, Kiran Kumari, Sajina Rai, Anubhav Shukla, Vikas Yadav, Yogi Kumari, Shabini Malik, Neha Morgan, Kiran Sukara, Manju Gora. I request all of you to please assemble in front of the stage. विकास आप नहीं इधर सर साइड से इधर हो जाए नहीं नहीं इधर ठीक है आप keep it up. Thank you so much. Thank you to all the dignitaries. We have Sarita ma'am also. Sarita ma'am, please take a picture with us. Everyone has taken a picture. Please join us for a picture. A few shots for Sarita ma'am. Ma'am, you can. Today's national seminar on education for Vikasit Bharat at 2047 has truly reminded us that journey towards a developed India begins in our classrooms, grows through our educators, and shines through every empowered learner.
Let us carry forward the insights, commitments, and aspirations shared today, and work together to build an India that is educated, innovative, and globally leading by 2047. With this, we formally conclude today's seminar. I request everyone to please rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे